Hello, everyone, and welcome to this session. This is going to be a very interesting session brought to you by Vaishnavi and Unacademy. And I will just wait for a few minutes so that I get all my students to come in, and then we can start with the whole process. Okay, so this is what we are going to be discussing. We are going to be discussing how to score 25 to 30 marks in the English language section for CLAT preparation. So I hope I am clearly visible and audible to all of you. Am I clearly visible and audible to all of you? Hi, Vikhyat. Welcome, welcome. So I have Vikhyat who is telling me that yes, I am visible and audible. So let's start with this session. This session, I'm just going to tell you before we get started with the session, I would like to tell you what we are going to do in this session. This session is going, we are going to talk about कि कैसे score करना है 25 to 30 marks in the English section. Okay, exactly, which is the total marks. Okay, so how to get all correct and accuracy kaise badhegi, all that we will be discussing. Hi, hello Shivani. We will be discussing all that in this session. Okay, so good afternoon again to you too, Shivani. All right, so let's just wait for some time and then we can start. Now, this session is going to be very, very interesting. So, let's just quickly uh, go through some of the details that are crucial for you as a learner. सबसे पहली बात मेरा टेलीग्राम चैनल which is unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. You can subscribe to the channel by scanning the code and scanning the QR code, and you can avail up to 30% discount on everything if you use the code VP10. Please use VP10. All right. Then is the information that I am giving, which is very, very important, and especially when we are talking about CLAT का preparation and mocks में mocks बहुत crucial हो जाता है in इस sense में, because we are supposed to score. You cannot score 25 to 30 unless you have been giving mocks regularly on a regular basis. जब आता है an academy का mock, make sure that you are there to give it. Okay. So it has already started from the 19th March onwards, and you can get scholarship if you there's blue tag. If you click on it, you can get scholarship for the mock. Now, you can save up to 30% off. Like I said, if you just use my code VP10 to subscribe to anything on an academy. Okay, so you can get up to 30% off. Okay. There is a level up batch that is going to be a foundational batch, which is going to start from the 30th of March, and I will be taking English language in that batch. So make sure that you enroll. Okay. All right. Then is the MHCT crash course, which is again available for a price of 4,999 only. So go and join the crash course because you will not get an offer like this again. Law Vistara is an intensive batch for LSAT, SLAT, and MHCT. Please make sure that you enroll in this batch if you're preparing for any of those exams. Then there is a special announcement, the last one, I promise, that is the Warriors. This is going to be a droppers batch for CLAT 2024 aspirants, and the language that will be used will be English. Okay. And again, I will be taking English language in that batch. So please make sure that you enroll yourself now. Okay. Um, let's get started.
with the hi Bhairavi, good afternoon, good afternoon. With what are you supposed to do? Okay, this session I will be giving you a clear picture as to what to do. Okay, um, please make sure that you're listening more than you are watching. Okay, so you're supposed to listen to this very, very well because this is once in a lifetime advice that you're going to get. Okay. All right. So the first thing that you are supposed to do is plan, and make. Okay. What are you supposed to plan? Now, when we talk about English language, you need to understand something कि English language अगर आप daily नहीं कर रहे हो, then your entire CLAT preparation will be shaky. क्योंकि अगर everything is in English except the quantitative reasoning part, everything else is in English. आपको critical reasoning solve करने के लिए English देखना पड़ेगा. आपको even for current affairs there is English that you will have to read on a daily basis. Then again for legal reasoning you have to of course study English or and a lot of people have asked me कि when we are talking about English language क्या ऐसा जरूरी है कि मैं English English speaking board से ही 12th किया हूँ तो is that a requirement or will I be able to do it? The answer is there is no such requirement and of course you will be able to do it. Okay, so don't you worry about these things. अगर आप ये सारे काम डेली करते हो तो I guarantee you that you will be scoring good marks. Okay, which would be likely from 25 to 30 in your mocks, and finally that will help you get better. Now इट इज नॉट द लैंग्वेज दैट यू आर स्टडिंग. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज आप नहीं पढ़ रहे हैं. आप क्या पढ़ रहे हो? यू आर studying everything. You are gaining knowledge in English. Okay, आपका means या mode of gaining knowledge is English. Okay, so that's why English becomes important, and that's why only reading English becomes a lot more crucial. So uh, a lot of people say मैम मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ और मैम मैं इंग्लिश मूवीज और सीरीज देखता हूँ. Will that help? See, in the long run to communicate, probably it will help. It will help you broaden your mindset when you watch a lot of series and listen to a lot of podcasts, but it is not going to help you in CLAT. ठीक है, तो CLAT के इंग्लिश के लिए Hi Triranga, good afternoon. CLAT के English के लिए what are you supposed to do? What are you supposed to do that will help you for CLAT or any law preparatory exam के लिए आपको English कैसे पढ़ना है? You have to just concentrate on reading. Okay, so you have to read. Now I cannot stress this enough. मैंने अपने classes में भी बोला है and I'm going to repeat it once again and I'm going to repeat it every time that I'm going to come up with a video, that you have to read. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो probably I'm not a good reader and my English is weak, तो इसीलिए मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे बस फैक्ट्स देख लेने चाहिए जीके के लिए, इंग्लिश के लिए मुझे बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेने चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा. नो, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अवॉइडिंग समथिंग दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश का फाउंडेशन ही अगर आप लॉ प्रिपरेटरी एग्जाम में देखोगे तो इट इज ऑल अबाउट रीडिंग. ओके, सो द मोर यू रीड the more you get better at it. कोई भी काम आप even when you started riding a bicycle, आप शुरू दिन ही ऐसा नहीं हुआ कि you started riding very well from the very first go. आप कितना भी कोशिश कर लो, unless you practice something on a regular basis, it will not be as fruitful as just doing it for a day or intermittent studying will not help you. कोई गैप नहीं आना चाहिए आपके रीडिंग में. इट शुड नॉट स्टॉप. इट शुड बिकम एज बिग ऑफ अ रूटीन, एज बिग ऑफ अ रिचुअल लाइक brushing your teeth. You cannot go without brushing your teeth. I hope nobody goes without brushing their teeth because that will be awful. And so is reading. So if you are preparing for CLAT and you're not reading, you are doing something very bad to your health, your mental health. Okay, so make sure that you start reading. Now how do you read? कैसे पढ़ोगे आप? You will have to read for 90 minutes every day. 90 minutes every day. 90 minutes of reading has to be done on a daily basis. आपको अपना एक schedule बनाना पड़ेगा. The first thing that you're supposed to do is
प्लान, ओके। द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आज आप कुछ और पढ़ रहे हो, कल आप कुछ और पढ़ रहे हो, परसों आप कुछ और पढ़ रहे हो, you are not doing any justice to your studies, okay? So एक शेड्यूल बनाना है, repeated, make sure that it is repeated effort that you are giving, okay? So schedule, right? You have to make a proper schedule. अपना शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम टेबल देखिए. नाउ अगेन आई हैव टोल्ड दिस, आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन, सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है. ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि every single student has the same capacity of retaining and understanding, ठीक है? तो आपको अपने आप को सबसे पहले पहचानना है. when you are planning, make sure that you are doing complete justice to yourself, okay? आप किस टाइप के रीडर हो, आप किस टाइप के, आपको कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, that is a very major factor. Because let's say I'm a person who love studying at night, I'm nocturnal in that way, I am very active at night, तो मैं पढ़ूंगी कब? मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम है सबसे ज्यादा, उसी टाइम मैं पढ़ूंगी, ओके? सो इफ यू आर एक्टिव एट नाइट और इफ यू आर एक्टिव एट डे, you choose which time you are studying. And don't हम बहुत बार ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं, या तो जो हमारे कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर होता है, इट इज नॉट समथिंग दैट इज फीजिबल फॉर अस. एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि हम वो शेड्यूल को एक दिन मुश्किल से फॉलो करते हैं, दूसरे दिन ड्रैग करके करके किसी तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि मैम ने बोल दिया था फॉलो करने अपना शेड्यूल. सो वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग इट टू बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे आपका शेड्यूल goes for a toss. So don't be unreasonable when you are planning, that you are keeping a separate time allotted to just get distracted, okay? Do this and you will not get distracted during studies. You will know कि हमारे पास टाइम है, कि उस टाइम हम बैठ के हम सोचेंगे, हम डूडल करेंगे, हम टीवी देखेंगे, या वॉट एवर source of your distraction is, या हम social media platform पे रहेंगे. So make sure that you have a time dedicated to be distracted, okay? So dedicated time to get distracted. Second thing, third thing that you have supposed to do in this schedule, पहले तो शेड्यूल में आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से देखोगे कि आप कितना पढ़ सकते हो और कब पढ़ सकते हो. सेकेंड थिंग इज यू आर सपोज टू डू इज कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो कीप अ टाइम टेबल जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो. एंड ऑल्सो मेक श्योर, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट. इट्स नॉट दैट यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड आफ्टर दैट, कंप्लीट सोल्यूशन है ये उसका. लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मेक श्योर दैट यू कम बैक, okay? So this piece of paper advice, I have given it to everyone and I'm giving it to you. This is a fantastic advice. Whenever you think आप पढ़ रहे हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, विच इज वेरी नेचुरल टेंडेंसी, तो आप क्या करोगे, एक पीस ऑफ पेपर हमेशा यू कीप इट नेक्स्ट टू यू, सो दैट वेन एवर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड यू पुट अ डॉट ऑन इट, okay? When you come back and you realize कि अरे मैं कहीं और चला गया था पढ़ते पढ़ते, then you make sure that you putting a dot on it. And as these dots increase, you will see कि इतनी बार आप distract हुए थे उस दिन, okay? पढ़ते टाइम. Again, and there is something called as brain का capacity also, caliber as well, कि इतनी ही देर पढ़ सकते हैं. तो आपको ये भी कैपेसिटी पता होना चाहिए कि आप कितनी देर बैठ सकते हो पढ़ने के लिए. एंड इफ यू आर सिटिंग फॉर 2 hours, हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली प्रोडक्टिव आवर्स? डोंट लाई टू योर सेल्फ, ओके? मेक श्योर दैट आप देखो कि आप कितनी देर एक्चुअली में बिना डिस्ट्रैक्टेड होके फुल प्रोडक्टिविटी दे रहे हो अपने पढ़ाई को. वो टाइम भी नोट कर लेना, तभी उसी हिसाब से आप बैठोगे कि अच्छा, मैं अगर 4 घंटे बैठता हूं तो मैं 2 घंटे ही पढ़ पाता हूं. सो आई विल make sure that I sit for 2 hours so that I can study for sit for 4 hours so that I can study for 2 hours. So coming back to this paper, every day make sure you do it. For everything that you're studying, make sure you keep a notebook जिसमें आप ये dots लगाओगे, and you will see that with time, बिलीव मी, विथ टाइम ये डॉट्स कम होने लगेंगे, बहुत ड्रास्टिकली और ड्रामेटिकली कम होने लगेंगे, इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप डिस्ट्रैक्ट भी कम होने लगेंगे. उसका मतलब क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट कम हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा हो, ओके? सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर शेड्यूल. डोंट लाई टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू मेक एन ऑनेस्ट शेड्यूल कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ या इतना मैं हर दिन दे सकता हूँ पढ़ाई को, ओके? सो अकॉर्डिंगली, बट
90 minutes means 90 minutes of reading. Okay, this you cannot cut it down. You can probably divide it into different chunks. Jaise for example, you can divide it into 60 plus 30 minutes. We will talk about this as well कि क्या पढ़ना है in 60 to 30 minutes में. ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो. You don't have to sit in one stretch कि मैम ने कहा है 90 minutes तो मैं उठूंगा ही नहीं 90 minutes तक या उठूंगी ही नहीं 90 minutes तक. ऐसा नहीं करना है. The overall reading time should be 90 minutes. Okay, it's not necessary that you're sitting in one stretch or two stretches or three stretches. 90 minutes of reading every day. I hope this is clear. Okay, now when you are reading, अभी आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हो, अगर आप beginner हो when you are reading, um, Triranga has asked a very good question, and if anyone else has a question, please do ask. I will be looking at your comments and I will be responding accordingly. Any other doubts you have apart from what I'm discussing? तो ये जो when I टॉक अबाउट बैड हैबिट ऑफ रीडिंग आउट लाउड, ठीक है, त्रिरंगा ने कहा है कि उनको बीमारी है कि वो जोर जोर से पढ़ते हैं, ठीक है. नाउ दिस हैपेंस विथ एवरी न्यू रीडर, सो यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट. यू डोंट हैव टू शुरुआत में आप लाउडली पढ़ते हो, देन इट हैज टू गो इन योर हेड. सब वोकलाइजेशन करना है, मतलब मन में पढ़ना है, ठीक है. सब वोकलाइजेशन करना है, मतलब मन में पढ़ना है, ठीक है. नाउ सब वोकलाइजेशन इज बेसिकली आवाज चलते रहती है आपके दिमाग में, जो आप आपके साथ साथ पढ़ते रहता है. नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, दीज टू आर द बेबी स्टेप्स. The first two steps towards good reading. Okay, so पहले तो आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है. नाउ यू डोंट हैव टू कॉम्प्रीहेंड इन एनीथिंग. आपको समझना कुछ नहीं है जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो. यू जस्ट हैव टू रीड. ओके, सो मेक श्योर यू आर ओनली रीडिंग, नॉट लुकिंग फॉर वर्ड्स, नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग in the middle. You are just reading. Okay, so when you do that, when you just read, you will get distracted less, because and you don't even have to concentrate on what you are reading. आपको बस पढ़ना है, बस पढ़ना है. समझ में आ रहा है? क्या पता. नहीं आ रहा है? क्या पता. कोई क्लू नहीं है क्या लिखा हुआ है? इट इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर ओके. आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर स्ट्रगलिंग टू रीड द वर्ड, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर द बिगिनर्स प्रॉब्लम्स, और ये आते ही आते हैं. सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट. यू आर जस्ट क्रॉसिंग अ लेवल, ठीक है. तो इस लेवल को क्रॉस करने के लिए दीज आर द हर्डल्स. तो पहले आप जोर जोर से पढ़ोगे, फिर आप मन में पढ़ना शुरू करोगे, और एक टाइम आएगा जब आपको कोई वॉइस ओवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस स्कैन करोगे, ठीक है. तो वो टाइम आने तक यू हैव टू सब वोकलाइज, ठीक है, मन में पढ़ना है. हम्म. हाय राज, आई एम डूइंग गुड. हाउ टू गेट 20 to 25 to 30 marks in English language के ऊपर डिस्कशन हो रहा है. How aware you are, Raj. It is so surprising. Okay. All right. Then you are supposed to, ये तो बात हो गई रीडिंग के बारे में, ठीक है. आपको ऐसे पढ़ना है, बेसिकली 90 minutes of reading. इसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे when we are discussing what to read and what not to read. Very important again. Then you are supposed to make sure that you are giving all the mocks. इनिशियल कुछ मॉक्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, अरे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इसमें तो कुछ मार्क्स नहीं आएंगे या माइनस में मार्क्स आएंगे. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. एटलीस्ट यू आर टेस्टिंग द वाटर्स, ठीक है. आपको पता चलना चाहिए कि आप जहां जा रहे हो, आप जो एग्जाम देने वाले हो, उसमें आप कैसे इंप्रूव करोगे कि आप अच्छा कर लो, ठीक है. तो वो पता करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लेवल राइट नाउ. आई टेल दिस अबाउट एवरीथिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको पहले लेवल पता होना चाहिए, वोकैबुलरी का आपको लेवल पता होना चाहिए, आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज का ओवरऑल लेवल पता होना चाहिए, आपको क्लैट का ओवरऑल कि आप कितने नंबर ला रहे हो. तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है, राइट. अगर आप नहीं देखोगे मॉक्स, अगर आप नहीं लिखोगे मॉक्स इस डर से कि नंबर बहुत कम आएंगे,
तो दैट फियर विल जस्ट कीप ग्रोइंग। आप हर बार मॉक्स अवॉइड करने लगोगे, आप हर बार यही करोगे कि अगली बार दे दूंगा, ज्यादा प्रिपेयर होके दूंगा, बट दैट प्रेपरेशन, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परफेक्शन स्पेशली, जो लोग को लगता है कि अभी तो कुछ तैयार नहीं है, जब तक कंप्लीट तैयारी नहीं होता है तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई मॉक्स नहीं दूंगा। दैट इज अ रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। You have to push yourself to give more mocks, and an academy is coming up with a lot of mocks, so please make sure that you are giving all the mocks, even if you are scoring marks in the negative. Okay, now, hello Ronit. um यस त्रिरंगा, विद साइलेंट रीडिंग यू डू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड, क्योंकि जब आप आउट लाउड पढ़ते हो तो आप अपने आप को स्लो डाउन करते हो। व्हेन यू रीडिंग इट आउट लाउड, यू आर स्लोइंग योर सेल्फ डाउन बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। आपका जब तक टिल योर माउथ इज मूविंग यू कैन नॉट रियली थिंक अबाउट इट, सो इट इज स्लोइंग यू डाउन कंप्लीटली। तो वोकलाइजेशन सबसे पहले बंद करना है। आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ठीक है? और इफ यू नीड हेल्प विथ प्रोनाउंसिएशन एंड यू थिंक यू वांट टू improve दैट एज वेल, दैट इज अ सेपरेट प्रायोरिटी। वो आप एडिटोरियल में जब मैं पढ़ती हूँ, सो यू जस्ट हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एज टू हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट समथिंग दैट इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। प्रोनाउंसिएशन का कोई काम नहीं है, आपको पढ़ना है बस, ठीक है? आपको वो वर्ड जानना है, दैट्स इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल स्टेटमेंट। आपको एक वर्ड का मतलब और इसका प्रोनाउंसिएशन, वो सारी चीजें पे नहीं ध्यान देना है। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके? हम्म। रोनित, आपकी ठीक है, आपको एमएचसीटी का एग्जाम देना है, एंड सो गोज टू राज एज वेल। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पे। आप अगर अटेंड करोगे उन वीडियोस को, तो जैसे मेरा हर दिन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई हैव एन एडिटोरियल सेशन जो 12 o'clock स्टार्ट होता है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दोज सेशंस, ओके? दैट विल हेल्प यू अलॉट, ओके? आई थिंक that will help you a lot. Okay, now make a self check card. Now what is this? This is like your report card, but only you can see it, okay? अगर हम डिनाई करते रहे और डिनाइल में रहे कि नहीं हमारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, हमें नहीं जानना अभी कैसा चल रहा है या क्या चल रहा है, बस चल रहा है, ठीक है? इफ यू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, you will not be able to plan accordingly. Where do you need improvement? What sort of improvement do you need? तो एक report card अपने लिए बना लो. Make sure that you're making this report card honestly about yourself, and this is not to demotivate you but to keep you in reality. ठीक है? आपको अपना reality पता होना चाहिए, right? कि कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ करना है। अगर आपको ये सब पता ही नहीं होगा, इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, इट विल टेक अ लॉन्ग वे। तो आपको क्या करना है, देखो सिलेबस इज वेरी लिमिटेड, जितना भी बड़ा है, बट इट इज लिमिटेड सेट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, राइट? सो इफ द सिलेबस इज लिमिटेड, the questions that will come from a limited set of topics. You just have to focus and get better at those topics, है ना? तो आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है कि कितना काम करना होगा इस सिलेबस के लिए, मैं बता रही हूँ आपको कितना काम करना होगा। उसी हिसाब से मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग सेल्फ चेक कार्ड, जिसमें आप ये भी लिखो कि आप डेली कितना, हाउ मच टाइम आर यू गिविंग। सो यू हैव टू व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन दिस सेल्फ चेक कार्ड, ठीक है? क्या लिखना है इस सेल्फ चेक कार्ड में, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो फर्स्ट थिंग दैट यू विल मेंशन इज डेली आपने कितना आवर्स दिए, ठीक है? आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है? डेली आपने लेट्स से 5 आवर्स दिए, ओके, और टू स्टडिंग,
ठीक है। अब इसमें सब सेक्शन होगा कि कितना कितना टाइम दिया आपने, लेट्स से 90 मिनट्स दिया इंग्लिश को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसको सब सेक्शन बना लो, ठीक है, कि आप हर दिन इक्वल प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हो कि नहीं। मेक श्योर दैट यू यू हैव इट ड्रॉन ऑन अ बिग चार्ट, कि आप उसमें नंबर्स एंटर कर सको हर दिन, और आप देखो हर दिन उसे, ठीक है। Then, apart from this, the second thing that you are supposed to write on this self check card is your mocks. ठीक है, मॉक आप कितने दे रहे हो, उसमें कितने नंबर आए हैं हर मॉक्स में, टोटल नंबर कितना आया है, ठीक है, लेट्स से 25 टोटल। हर सेक्शन में कितना आया है, यू डिवाइडेड एंड सी, ठीक है, हर सेक्शन में कितना आया, ठीक है। एंड एवरी टाइम यू गिव अ मॉक, मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल द स्कोर्स इंडिविजुअली एज वेल एज द टोटल स्कोर, कि आपको पता चले कि आप कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगेन अनदर थिंग दैट यू आर सपोज टू लुक एट, कि हर बार जब आप मॉक दे रहे हो तो मॉक एनालिसिस वीडियोस भी आते हैं अनअकैडमी से। सो आप ये एनालाइज करके ये देखो कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस में गलत हो रहे हो, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, कौन से टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, राइट, कि आप कौन से टॉपिक में कंप्लीटली वीक हो, ठीक है। तो उसको अगेन यू विल नो कि आपको प्रायोरिटी किस टॉपिक को देना है, कहाँ कितना ज्यादा प्रायोरिटी देना है, और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर डेली एंड योर मॉक, एंड देन apart from this you will also be writing about a novel that you finished, ठीक है, क्योंकि आपको एक बुक उठानी ही होगी। अगर आज से पहले आपने कोई रीडिंग नहीं की है, सो यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग, एंड यू व्हाट डू यू हैव टू रीड, यू हैव, वो भी मैं बताऊंगी, बट यू हैव टू रीड बेसिकली एवरीथिंग पॉसिबल। आपका यू विल बी फ्लरिशिंग विथ नॉलेज, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ गेट्स विल ओपन फ्रॉम इकोनॉमिक साइड, फ्रॉम फिक्शन साइड, फ्रॉम हिस्ट्री साइड, फ्रॉम जियोग्राफी साइड, सब चीज का ज्ञान होने वाला है आपको। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अप फॉर इट, राइट, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो what should your day look like? सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लान करना है कि आपको 92 मिनट्स देना है एवरी डे टू रीडिंग with 2 RCs. Then you have to plan your mocks, that you're giving all your mocks. Then you have to make a self check card जिसमें आप ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपको डेली करना है वो सारे आप इसमें लिख लो, और कर रहे हो कि नहीं, make sure that you're making that checklist, okay? All right. Okay. Mm-hmm. और इस सीरीज में कितने क्लास हो? हाँ रोनित, बहुत दिस हैज स्टार्टेड 2 weeks ago एंड देर आर लॉट ऑफ क्लासेस, तो डेफिनेटली हेल्प होगा रोनित। और मुझे बताइएगा कि अगर आपको इफ यू एक्चुअली दैट हेल्प्ड और नॉट, ठीक है। Ma'am, I want to make my English pronunciation more precise, or let's say I want to practice US accent fluently. Can you suggest me any practical method to practice that? Alpesh, if you want to improve your pronunciation, this is off topic, but I'm going to help you out over here, okay? Pronunciation अगर आपको practice करना है, so you have to make sure whichever language that you want to become good at, you have to or accent that you want to be good at, you have to constantly just listen to it. You have to make sure that you're listening and watching it, people talk, how they talk and what do they say. So you have to basically watch a lot of English series, movies, podcast you have to listen to. Listening helps a lot. So when you listen to something, you know how they are pronouncing, okay? And the best advice for US accent is roll your R's. R's have to roll, okay? So for British accent, you don't have to really roll your R's because they say they drop the R's in the end. So car, water. Okay, so R is dropped, but in American accent, R's are rolled, right? So water, car. Okay, so that is how you. That is just a starting tip. So I hope you get there. If you want to really practice it, it is not that hard. It is not something. Voice and accent can always you can modulate accordingly. Okay, so just pay attention. That's all that it takes.
Yes, Ronit, my Telegram channel name is, I will again, okay, let me just do it. This is my Telegram channel name, and if you scan this, you will be able to go back to it, to the channel directly. Okay, तो आप उसमें जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए. Okay, all right. Now, रीडिंग कैसे करना है अब ये आपका वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग योर डे ओके सो हाउ डू यू प्लान योर डे first things first, you are supposed to do 5 minutes of meditation. Okay, make sure that you're doing 5 minutes of meditation every day, and this is not something that I'm advising because I think this um, will help you just for now, but this is something that is crucial for your overall mental development. Okay, abhi aapko you have to make sure that you're staying in the zone, ठीक है, and you're getting least distracted and concentration increase हो रहा है आपका, because this exam is all about your concentration, persistence कि आप कितना daily मेहनत कर रहे हो, and your hard work. It has got nothing to do with your IQ, आप कितने smart हो और आपने कितना score किया है स्कूल में अपने बोर्ड्स में, that doesn't matter at all. I mean, if it is above 45%, it does not matter कि आपने कितना स्कोर किया है, आप कैसे थे स्कूल में, आपका करिकुलर एक्टिविटीज में आपको कितने मार्क्स आते थे, doesn't really matter. Okay, what matters is अगर आपको क्लैट देना है तो एक चीज तो बहुत जरूरी है, दैट इज डेडिकेशन. ठीक है, और वो कैसे आएगा अगर आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे, वो कैसे होगा जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो कैसे होगा जब आप मेडिटेशन करोगे डेली. एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मेडिटेशन विल हेल्प यू go the long way. So there are very very good meditation apps. आप ऐप के बेसिस पे स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आपको टीन एज में, लाइक आई सेड, टीन एजर्स आर द टीन एज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, एंड दिस इज द टाइम ऑफ योर लाइफ वेयर यू कैन मेक इट और ब्रेक इट. तो ऐसा नहीं है कि लोग अब जितने भी लोग हैं प्रिपरेशन करना शुरू किए होंगे क्लैट के लिए, हाउ इज इट दैट ओनली वन पर्सन गेट्स ऑल इंडिया रैंक 1 and 2? Because they have been doing it not because they are a genius at school, but they have been doing it regularly, wholeheartedly, dedicatedly. Now अगर आप देखो तो ये फेल होना, फेलियर इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन, एंड इट इनफैक्ट फेलियर इज द नॉर्मल सिनेरियो. ठीक है, अगर आप देखोगे तो बहुत लोग फेल होते हैं, एवरीबडी फेल्स इन लाइफ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो फेलिंग इज बेसिकली यू कंजर्विंग, ट्राइंग टू कंजर्व योर एनर्जी, है ना, क्योंकि हम बायोलॉजिकली इसीलिए तो बने हैं ताकि हम एनर्जी बचा के रख सके. दैट्स व्हाई यू हेट वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइजिंग, बिकॉज दैट इज अ जनरल टेंडेंसी. सक्सेसफुल कौन होता है? जो उसके अगेंस्ट हर दिन काम करता है, राइट, goes against the natural tendency and does something spectacular. Okay, because it takes all your energy to switch your life from comfort to to मेहनत, राइट. क्योंकि आप कंफर्ट तो आपको चाहिए, बॉडी को चाहिए ही, आप दे रहे हो तो लाइफ सेट है. फेल होगा, फेल होगा इंसान, बार बार फेल होगा, बट कंफर्ट चाहिए. लेकिन अगर आपको कंफर्ट नहीं चाहिए, यू वांट टू गेट समवेयर इन लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग दैट इज not done by most of the ordinary people, and that is this is that. Okay, so you have to meditate for 5 minutes after all this bhashan, and what I want to say is, please make sure that you are not taking this lightly and you are meditating for even for 5 minutes. Okay, you can do more than that, but 5 minutes is the least requirement. Please make sure कि आप, and you don't have to be in a certain place, in a certain vibe, or in a certain mood to meditate. You can do it anywhere, any place, anytime. Okay, and in any mood. So there are two apps that are very famous. अगर आप देखोगे तो Headspace and Calm, both are doing very very well. Apart from this also there are many meditation apps, or you can just watch a video on YouTube and you can start meditating. Okay, टू इंक्रीज योर अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि हम या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या तो अपने फ्यूचर को प्लान करते रहते हैं. सो दैट हैज टू स्टॉप फॉर सम टाइम, राइट. एंड द रीडिंग प्रिंसिपल इज 90 minutes of reading, where 60 minutes you are giving to न्यूज़पेपर रीडिंग. न्यूज़पेपर रीडिंग को आप कितना टाइम दे रहे हो? 60 minutes दे रहे हो. एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट
एडिटोरियल्स, ओके। 60 मिनट्स आप पढ़ रहे हो, और 30 मिनट्स जो है उसमें आप एक नॉवल पढ़ रहे हो, राइट? यू कैन रीड अ नॉवल, ओके, यू कैन स्टार्ट रीडिंग अ नॉवल। हम्म। ओके, सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग नाउ। नॉवेल जब मैं बोल रही हूँ, लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी कि मैम कोई नॉवेल तो बताओ। ठीक ठीक है, कि कौन सा नॉवेल पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करें? सो दीज आर द नॉवेल्स ऑफ डिफरेंट जॉनरेज दैट आई वुड वांट यू टू, दैट आई फील would be a good start. लेकिन again, I'm not an expert. These are the novels that I started with and I really liked it. अगर inspirational यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, but inspirational, again, I will tell you about it. So, plan your day. Remember, 5 minutes of meditation and 90 minutes of reading, where 60 minutes you're giving to newspaper reading, and 30 minutes you're going to give to novel. Okay. If you're a beginner, you should start with fictions. ठीक है? तो this is how you plan your day. Now, what are you supposed to read? आपको पढ़ना क्या है? हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है, न्यूज़पेपर में। वॉच द एडिटोरियल वीडियोस, मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग एज वेल, ठीक है। एंड every day I told you, from Monday to Friday you have an editorial session with me from 12 onwards, so make sure that you're reading along with the video, okay? You're watching the video and that will help you a lot. Again, now apart from that, these are the novels. अगर आप कोई भी genre पे कर सकते हो, whatever you like, okay? It's not necessary, nobody will push you to start with something that is very very difficult to read, okay? So don't start with non-fictions, don't start with autobiographies or biographies, don't start with uh, classics, because very difficult to understand, right? So start with, if you are looking for detective and mystery, then, and then there were none, Agatha Christie. Again, Agatha Christie has a lot of novels, so you can start with any of those, okay? Agatha Christie, as the Americans call it. So Agatha Christie की बहुत सारी novels हैं, so you can start with any of them, but then there were none is one good book, okay? The Night Fire by Michael Connelly is also a great detective and mystery novel. You can start with that. And my personal favorite, The Adventures of Sherlock Holmes. Uh, Again, the Sir Arthur Conan Doyle one is beautifully written, and it is British English, so you cannot go wrong with it. Okay, so you can always start with The Adventures of Sherlock Holmes. How he solves mysteries is simply fascinating, and it can be read again and again. Okay, then if we talk about fantasy, the best fantasy novels would be Harry Potter, of course. I'm sure everybody knows Harry Potter, so you can start with that, or you can start with The Lord of the Rings, my personal favorite, by J.R.R. Tolkien. And then Chronicles of Narnia is also good by C.S. Lewis. Okay, so these are the ones for fantasy. Then romance, you can start with The Fault in Our Stars. Then you can also, by John Green, very nice novel. Pride and Prejudice is a classic, but is still simple language, and I'm sure you will be able to understand, by Jane Austen. Wonderful writer, amazing writer. It Ends With Us is trending now, so you can start with that as well. It Ends With Us, It Starts With Us, all these are Colin Hoover's new novels, and it is doing really well, so you can start with any of the three, okay? But make sure when you are starting with these books, you finish it and then move on to the next one. And if you're looking for legal fiction, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं लॉ ही से रिलेटेड फिक्शन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, then you can start with any of John Grisham. John Grisham is, if you search for legal fiction, his name will be all over the place. Okay, so The Whistler is very good, and then Harper Lee's To Kill a Mockingbird is something that every lawyer should read, and it is something of a compulsion also in some of the law schools, but not for you. So To Kill a Mockingbird, again, the language or the lingo is a little colloquial. So
you might struggle with the languages at the beginning, but the point is not to read and understand. Nobody is going to ask you the moral of the story. तो आपको बस क्या करना है इसमें? You just have to read. नहीं भी समझ में आएगा तो it is absolutely okay, because this is your first novel. Okay, so नहीं समझ में आ रहा है, it is still okay. You're still reading. Okay, The Judge's List, again by John Grisham, is another good novel. Okay, so you can start with entire day. What's the perfect time for reading novels? I personally like reading in the evenings, but some people like it in the mornings as well. So, early morning when you're sitting with a cup of hot milk or whatever you drink, your beverage. So, or with breakfast, you can simply read. So that is a good time. And reading novel can happen at any point of time. Whenever you're not feeling like doing anything and you want to still be productive by doing very little, you should read a novel. Okay, instead of whenever you feel like scrolling through Instagram, switch to, or Instagram or any social media platform, um, switch to reading. Okay, take it as a part-time hobby and try loving reading. Okay, because that is only going to take you places. अगर आपको reading से प्यार नहीं है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा प्यार. Okay, so everything that you have watched and you found interesting, any series or any movie that you found interesting, there must be a book on it, and that's how the movie came into picture. So you can try reading the book as well. Or you can just start with something very very simple. Just say Tuesdays with Maury is a very good book. Then The Alchemist is a very good book. I think I've told you this in the previous classes. Or The Monk Who Sold His Ferrari is a very good book. Okay, so these are very very basic. Or Ikigai, if you are into non-fiction, then again that is a very good way to start, because that will remove a lot of clutter from your mind and from your home. Okay, so I hope this is clear. Hound of Baskerville, yes, a while ago. That's good. Yes, that is one of my favorite episodes or chapters of Sherlock Holmes. Okay, now what to write? You are supposed to read and then you're supposed to write as well something. Okay, so I have been telling you in my editorials classes that कि main idea पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको पूरा स्टोरी समझ में आया हो या नहीं आया हो, बेसिकली मेन आइडिया होता क्या है. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी है जो आप और आपके फ्रेंड दोनों देखना चाह रहे हैं. नाउ योर फ्रेंड गोज एंड वॉचेज इट बिफोर यू. ओके, नाउ अब आपके लिए मजा करके रहोगे, आप नहीं चाहते हो देखना वो मूवी, तो आपने क्या किया, ठीक है तुम ही मुझे बता दो क्या हुआ मूवी में. ओके, सो दैट फ्रेंड ऑफ योर्स विल नॉट टेल यू each scene by scene of the movie, right? He will be telling you कि basically overall क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हीरो मिला हीरोइन से, प्यार हुआ, गुंडा उठा के ले गया हीरोइन को, हीरो आके बचा लिया, दोनों की शादी हो गई, they lived happily ever after. So this is not the this is not something that was happening in every scene, right? So basically this is the overall picture. तो आपको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ओवरऑल क्या हुआ. ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग. पहले जब आप लिखोगे तो आपको खुद लगेगा क्या गलत सलत लिख रहा हूँ, या क्या गलत सलत लिख रही हूँ, बट दैट विल इम्प्रूव विद टाइम. ओके, ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग मेन आइडिया, पहले आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखना चाहिए, दिस इज समथिंग समथिंग, सो राइट इट इन अ लैंग्वेज दैट यू ओनली अंडरस्टैंड. ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही लिखना है, आपको जो समझ में आए, जैसे ठीक लगे आप बस लिखना शुरू कर दो. और कंक्लूजन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू आर सपोज टू राइट. एक दो लाइन का कंक्लूजन होगा जो आपको लिख देना है. ठीक है, ये दोनों चीज पे अगर आप ध्यान देने लगोगे, द पॉइंट ऑफ राइटिंग बोथ ऑफ दीज डाउन इज यू आर पेइंग अटेंशन टू दीज थिंग्स. ठीक है, तो आप जब भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो, आप मेन आइडिया लिख लो उस एडिटोरियल का पढ़ने के बाद, कंक्लूजन अगेन लिख लो पढ़ने के बाद कि फाइनली ऑथर ने क्या कहा लास्ट पैराग्राफ में, राइट? एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द ऑथर. ठीक है, टोन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द ऑथर. ठीक है, तो टोन समझना कि ऑथर जनरली थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में भी अगर आप समझ जाओगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन. कि पॉजिटिव है ऑथर इस पूरे मैटर के बारे में, नेगेटिव है ऑथर इस पूरे मैटर के बारे में, या न्यूट्रल है, बस डेटा स्टेटिस्टिक्स दे रहा है तो न्यूट्रल है. ओके, बस एक रिसर्च बता रहा है तो न्यूट्रल है. तो बस पहले ये ध्यान दो कि व्हाट इज इट, पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, इज इट न्यूट्रल. बस
Yeah, the Bollywood things. That's what I will. That is the story of a lot of Bollywood movies, yes. But these are the things that you're supposed to write down. Is this clear to everyone? And what are you supposed to solve every day? The last thing that you're supposed to do is solve. अब आपको क्या solve करना है? 2 RC आपको solve करना है हर दिन. Now बस solve करके छोड़ नहीं देना. You have to see if what you have solved is the right, what you have marked is the right answer or not. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? Okay, make sure that you read the correct answer and then move on to the next RC. ठीक है? So if you're making a mistake in the RC, solve it. Don't time it. Don't start timing it. अगर आपको 15 मिनट भी लग रहा है अभी RC solve करने में, it is absolutely okay. You have that much of time that you can minimize 15 मिनट into 5 minutes or 4 minutes. Okay, so 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है एक RC solve करने में, no problem. Take your time but solve. Okay, take your time but start solving. So this is something. Yes. uh, रीजन ऑफ राइटिंग द करेक्ट आंसर ये probably later stages of preparation में आएगा, लेकिन अभी you just have to see सही कहाँ हो रहा है, गलत कौन सा हो रहा है, और गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है. That is it. That these are the things that you are supposed to do. I will quickly just once revise what you are supposed to do. सबसे पहले तो आपको अपना दिन प्लान करना है जिसमें 90 minutes of reading देना है और 2 RCs लिखना है. अब आपको एक सेल्फ चेक कार्ड भी बनाना है, झूठ नहीं बोलना है उसमें, सब कुछ सच-सच लिखना है कि आप डेली कितना टाइम दे रहे हो एंड व्हाट इज़ द डिविजन ऑफ लेबर. देन मॉक्स के लिए भी आप कितने मॉक्स दे रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सेक्शंस एंड व्हाट आर योर वीक सेक्शंस. एंड एक नॉवेल अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने कौन-कौन से नॉवेल पढ़ लिए हैं, वो वहाँ पर एंटर होते जाएगा, ठीक है? देन यू आर सपोज्ड टू मेक श्योर दैट आप हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन एटलीस्ट करो. एंड ये रीडिंग का जो प्रिंसिपल बताया मैंने, 90 मिनट्स रीडिंग, इसको 60-30 में डिवाइड करना है, जिसमें 90 मिनट्स यू आर गिविंग टू न्यूज़पेपर, जिसमें अगेन यू कैन रीड करंट अफेयर्स एज वेल. बेसिकली 60 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है? और 30 मिनट्स यू आर सपोज टू गिव टू नॉवल रीडिंग. नाउ व्हाट आर यू सपोज टू रीड? हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, हिंदू एडिटोरियल देखना भी है और पढ़ना है साथ में. एंड देन बिगिनर्स के लिए दीज आर द नॉवेल्स दैट आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ दीज नॉवेल्स इन डिफरेंट जॉनरीज. डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, फैंटेसी में अगर इंटरेस्ट है तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो, रोमांस में इंटरेस्ट है तो इनसे स्टार्ट कर सकते हो, लीगल फिक्शन में इंटरेस्ट है तो इनसे स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू आर सिंपली लुकिंग फॉर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन तो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी टू किल, सॉरी, then The Alchemist and Tuesdays with Maury would be a good start. Okay, so these are the things that you're supposed to read. What are you supposed to write? You're supposed to write the main idea somewhere in your notebook or in the newspaper itself if you don't want to go to the burden of writing it separately. Newspaper में main idea, conclusion और उसका tone लिख लेना है. All right. So that is all the advice that I want to give you. And if you do all these things, I am sure that you will be able to score 25 to 30 marks. So go ahead and make sure that you're honest while doing all these things while you're doing it. And if anything that you need, any help that you need, you can always write it in the comment section and I will address those worries that you have. And everybody can give CLAT, barring any thing that you come from, whatever is your background, it doesn't matter. Anyone can crack CLAT. Okay, so if, but if and only if you are doing, you're putting in the hard work that is required. So that is it. That is me signing off. Thank you everyone for attending this session. I hope that this was something that was productive and fruitful to you. And I will see you again in the next session. Thank you, everyone. Let's crack it. Bye bye.